यूट्यूब चैनल से और बात करेंगे आप लोगों को साथ आज Q3 रिजल्ट के बारे में। Q3 रिजल्ट हाईलाइट श्रीराम फाइनेंस Q3 नेट प्रॉफिट स्लिप 22% to 2,530 crore. Q3 result highlight today the final trading day of the week, barring result from three Nifty 50 stock, Shriram Finance, BPCL and JSW Steel, while border market names like IndusInd Bank, DCB Bank, Karur Vysya Bank, Laurus Labs, Max and host of other companies will also be reporting result today. Along with this, there will be plenty of result reaction from the stock like IndiGo, Syngene, Bandhan Bank, Mphasis and the others will keep you updated the fastest with all the live updates on all of these right here. Q3 result highlight the final trading day of the week promise to be full of action with regards to quarterly result with over 50 companies reporting earning today as well. From the Nifty 50, Shriram Finance, the stock that's have been in the spotlight of its mega deal, along with JSW Steel and Cipla reported their result today. From the border market, IndusInd Bank, GCPL Max, Laurus Labs, JSW Energy, DCB Bank, Karur Vysya Bank, India Cement, Sona BLW, Urban Company, Nuvama Wealth Management, Sterlite Technologies, Paras Defense, Stylam Industries, Welspun Specialty Solutions, Atul Ltd reported their earnings today. Adani Energy Solution, Bandhan Bank, Mphasis, IndiGo, Client, Home, First Finance, Linko और ऑल कंपनी ने जो फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया। और पहले आप लोगों ने देखा जो थैंक यू ज्वाइनिंग आवर कवरेज ऑफ Q3 रिजल्ट के बारे में। और श्रीराम फाइनेंस Q3 प्रॉफिट स्लिप हुआ है 22% 2,530 करोड़। और आप लोगों ने देखा है मैक्स नेट प्रॉफिट हुआ है 151% आप लोगों ने देखा 151% टू 401 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ है Q3 के रिजल्ट के बारे में। और पूरा वैश्य बैंक का जो Q3 रिजल्ट आप लोगों ने देखा था 39 प्रॉफिट हो रहा है और ये अच्छे से आप लोगों ने देखा। और जो सुंदरम होम फाइनेंस नेट प्रॉफिट हो रहा है रेस कर रहा है 20% आप लोगों ने देखा और ये है 75.14 करोड़ आप लोगों ने देखा। और Q3 रिजल्ट अपडेट JSW एनर्जी आप लोगों ने देखा है JSW एनर्जी जो नेट प्रॉफिट हो रहा है JSW एनर्जी का आप लोगों ने देखा है नेट प्रॉफिट।